This is for our future selves, right? Yes, this is for a future self, and this is gonna be fun. I think so. I'm already getting those vibes. मजा आने वाला है. Okay. जी. So if you had, so welcome, Man Hmm. Chauhan, Mr. Man Chauhan. How are you feeling today? I was feeling so restless and lost just before I got to this call. But thank you that you took time and made me realize so many things over this period of 1 hour call that we were already having. कि भाई तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है गए 2 साल से जब से ये चैरिटी का काम शुरू किया है तो क्यों छुप छुपा के रख रहे हो चीजों को आने दो बाहर पता चलने दो लोगों को कि क्या चल क्या रहा है एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन्स तो आई एम ग्लैड कि यू टोल्ड मी एंड I am also a fool. I was like, चलो करते हैं. Please tell us this chappal wali story. We would love to hear it. Yeah, actually, yeah, Chupalori story. So I have been having this companion with me for quite some life. मेरा Dell वाला laptop, or I had to sign certain documents and agreement. जिसके लिए during registrations we get this digital signatures that we have to enforce use on any agreements or documents charity related काम से. And I was finding it very difficult because the current laptop that I'm using is my sister's. Even the Dell laptop that I used for with the chappal is also my sister's. So I don't have my own laptop because kuch saalon pehle he gave up on me. But I am grateful that He at gave least up on you, hai. yeah. Yeah, it gave up on me. I gave up on him because I really banged it. I really broke it down because it was also during the charity वाला ही काम जब मैं वो पुराने Lenovo laptop use करता था मेरा खुद का and it got stuck on a screen and I was already very frustrated with so many legalities to do with the charity और टाइम पे कुछ हो नहीं रहा था और एक दिन आया गुस्सा और उसको लिटरली पटक दिया कि वो खत्म हो गया उसकी स्टोरी और अभी नाउ करंटली हैव 2 लैपटॉप्स इट्स लाइक दोनों बैकअप ही है दोनों को इसमें से कोई भी सही तो चल नहीं रहा है पर अगर ये नहीं चला तो वो चल जाएगा ऐसा वाला सीन है. So I've been using this laptop. I can show you if you want. I don't know how to show this, but Please show us. this Somehow is show us. this The is the world wants laptop. to know. So this is the laptop I'm using, but it is pretty slow. It's a very old version, and kahin na kahin it is just haywire. Or the second laptop, it is in a very bad stage right now, but I can still show it to you all because it's Please. still a part of this conversation. So this is the Dell laptop that is literally on the floor right now, and Bhagwan Bharose hai. But this I think is almost 10 years old now, if not. Yeah, it's almost 10. I don't want to turn it on because shock lagta hai. It has a shock system going on with it. And what do you do for the shock system? What is your jugaad? My jugaad is a very Indian jugaad. So we don't have a fancy office or anything. We work from home. All our services that we're trying to put out to the world is virtual. So laptop does play a very important role. That is the only way I can stay connected with my people and do my work. So हुआ ये कि the current Lenovo that I use was not having Adobe Reader for the PDF and weirdly was not ready to install an Adobe Reader. Like literally PDF reader nahi hai mere laptop mein. So I was struggling with it because I had to open the document and then fix the signature on it. तो मैंने बोला कि चलो डेल की मदद ली जाए. अभी डेल का प्रॉब्लम है उसको लगते हैं झटके. It really gives out shocks. So I had to put my chappal, the rubber chappals on it.
put the laptop, turn it on, and use it that way. And वहां से मैंने कोशिश की कि मैं वो सिग्नेचर फिक्स कर पाऊँ. 3 दिन के मेहनत के बाद फाइनली आई रियलाइज कि एक्चुअली पूरी गलती लैपटॉप की भी नहीं थी. It is outdated versions, but it was also the application जो हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए, which was corrupted or giving some problems. So after 3 days, finally we can send out a client one of the documents, and it is a struggle. So this is just one thing that happens. And I was telling you this, and you said, "Why don't you go ahead and say it out to the world?" कि Yes. सबको लग रहा है, सबको लग शौक रहा है लग रहा कि है. शौक लग रहा है. एग्जैक्टली. और सबको क्यों ना वो शौक लगे कि भाई सबको लग रहा है कि काफी पैसा है एनजीओ के, एंड पीपल रनिंग receiving fundings and running the NGOs are doing pretty well. ऐसा जरूरी नहीं है. I am on a grassroots level, and specifically 2 साल से जो struggle मैंने देखा है to put across our cause out to the world, because again the topic is very sensitive. Gender affirming surgeries, LGBT के लिए हम मदद करना चाह रहे हैं, और अभी इतना स्टिग्मा है around the world. और उसके बीच में when we are trying to help the community and raise funds to help the community, it is a major challenge. I can't even express कि कितने compromises होते हैं इस बीच में. I am completely in depths right now because So tell I us don't. how in how much depth you are right now. Like uh, give us a number. if I have to, it's around 10 lakh rupees. Okay. Because because there were a prior approvals made to the applicants with regards to their surgeries, but donation did not come out on time. So I had to make sure that I had to arrange for that fund so that people who are waiting back on hope to receive and get their surgery done can actually avail and get it on time. We are still behind on a lot of applicants right now, hoping के मार्च 2023 में जो हमें एक डोनर मिला है 2 साल के बाद, वो कहीं ना कहीं टाइमली रिलीज कर दे पेमेंट, ताकि हम जो अभी पेंडिंग एप्लीकेंट्स हैं उनकी सर्जरीज करा सके. And they don't have to wait anymore. A lot of people don't even know that I have put my own surgeries on hold. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बताता, बिकॉज सब बोलेगे भाई चैरिटी चला रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, अपनी खुद की भी तो कर ले, Right. बट आई थिंक मेरे पर्सनल लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंस मैंने इस कॉज को दे दिया है. आई मेड इट एट माई लाइफ पर्पस, एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक. तो उसके लिए जो भी हो सकता है Yes. मैं कर रहा हूँ. या देयर इज लिटरली नो लुकिंग बैक. And secondly, weirdly, my mom was very supportive कि जहाँ पे उनका, like literally मैंने I have kept her gold in Muthoot Finance, like, and started the registration process and all with her help. And that is why she is, although she is a passive director, she's not active in the operations, but उनका वो gesture कि कर ले, you know कर ले Right. करके today I was able to register and get the ATG and other documents in place. पर ये सारा जो स्टोरी है मैं कहीं शायद कभी नहीं बोलता मीनाक्षी. So thank you so much. I would have not told anybody that what happens behind the scenes, how helpless sometimes I feel, and um, to do and learn everything on my own, because the charity has not come to me as heritage. It was not my family business, or it was not hereditary कि मेरे को किसी ने गिफ्ट में दे दिया, बोला बेटा चला. ऐसा कुछ भी Right. नहीं है. It is was my calling to do something for the community, and I have been sticking to it with a lot of efforts. And luckily I have good team members like you, Sharon, Akash, and who are there
and y'all are not even paid on time. Y'all know how things are. But like pending salaries, pending bills, yeah, pending applicants. So it's too much sometimes. But But how then do you find your journey? How do you find your journey? journey is Helpless, hopeless तो हमने सुना है. But how hopeful do you think you are about this journey? I always think कि अगर भगवान ने like I will just give this out like why am I still on therapies because even I had a childhood trauma and I also went through a transition तो मेरे भी कुछ triggers है present life में but मैं मानता हूँ कि if I was in my 11th grade when I tried to commit suicide और अगर मैं suicidal tendency से बाहर निकल के आज जिंदा हूँ तो I think it is because of this charity and its cause because मेरे life को जीना जरूरी था मुझे जीना जरूरी Right. था so for me it is inspiring every day to get out of my bed and connect with people, talk to people. Literally, sometimes I feel I'm begging, then I keep the call, I cry कि यार कब हो गई ये लाइफ इजी सबके लिए मेरे लिए आई डोंट पे अ सिंगल पेनी टू माई सेल्फ मैं क्या खुद को पे करूँ यार जब रेज But ही नहीं कर पा why? Why? रहा Do you think it's important to pay yourself and honor yourself? Man. Yeah, I think a lot of people have told me this कि मन कब तक तू ऐसा कर पाएगा जो तू कर रहा है सबके लिए जिनको पता भी नहीं है शायद Right. रियलाइजेशन भी नहीं है अप्रिशिएट भी नहीं करते कभी कभी कोई लोग तो वो कुछ ज्यादा बुरा लगता है because I know I'm 34 years old even I have plans to have my own house my own car get married someday have kids एंड शायद अगर इस पॉइंट में मैं बिकॉज आई एम एन एमबीए एंड ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास 13-14 इयर्स का एक्सपीरियंस है अगर मैं शायद दुबई में या किसी और कंट्री में काम करता देन ऑफ कोर्स आई वुड हैव पेड अ डिसेंट रेम्युनरेशन एंड एवरीबॉडी टेल्स मी कि तू जितना टाइम और एफर्ट डालता है तो उस हिसाब से भाई तूने भी खुद को पे करना चाहिए बट फिलहाल मैं Exactly. लैपटॉप बाय करने के लिए नहीं सोच पा रहा हूँ मेरा दिमाग कहता है यार इस पैसे में कितने बंदों की सर्जरी लाइक every time I think to buy Right. something for myself this first question is like इसमें कितने लोगों की मेंटल थेरेपीज हो सकती है इसमें कितने लोगों की सर्जरीज हो सकती है लाइक लिटरली लाइक मैं ये टी शर्ट का यू कॉम्प्लीमेंटेड एंड यू सेड लाइक मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए खुद को लेके चीजों को लेके like पहले मैं शायद when I was earning I was living in Dubai I was earning good I was buying good clothes and good stuff for myself and that has changed drastically अब मैं डीमार्ट जाता अब मैं अब मैं डीमार्ट जाता हूँ and Good I luck. have How do you feel? How do you feel going to DMart और चप्पल पे लैपटॉप अरे यार रखना? किराने की दुकान है यार डीमार्ट एंड लिटरली मेरे फ्रेंड ने बोला भाई दिल्ली जा रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए और मेरे पास आई जस्ट हैव वन पेयर ऑफ सूट तो हमेशा सोचता हूँ यार इंस्टाग्राम फेसबुक सब लोग सोचते हो कि भाई ये एक ही कपड़े में फोटो निकालता रहता है बट आई लिटरली डोंट spend money on myself my calculations have just turned around where it's no more about me anymore. पहले भी मैं ऐसा नहीं था. I would not go for myself first. I will always do something for others. But अब तो अलग ही level चल रहा है. Like this t-shirt I'm wearing, I'm very comfortable and I'm grateful. But it's for 129 rupees. ये DMart से खरीदा है. If anybody wants to buy, they can buy it from there. But OLX. OLX, I don't know OLX ये वो जो भी है अब सारे सस्ते चीजें अभी दिमाग में आ रही है एंड लाइक मैं लिटरली हर चीज मेरी बाइक मेरे ब्रदर इन लॉ की है आई एम नॉट इन्वेस्टिंग ऑन गेटिंग अ कार लाइसेंस बिकॉज फिर कार खरीदनी पड़ेगी तो कार खरीदना नहीं है बिकॉज सर्जरीज कराने हैं। तो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंड आई नो तुम मेरी थेरेपिस्ट हो तुम मेरे को बोलती है कि डिजायर्स रखो बड़े डिजायर्स रखो और बड़े and I'm realizing that that I at least have a better mental health right now through the sessions that I have
and that day might come, and today you decided to record this कि भाई 1-2 साल बाद मन जब चीजें बदलेगी तब तो हम वापस ये वीडियो देखेंगे, and that really inspired me. नहीं तो मैं ये नहीं करता, तुम्हें पता है, like you know everything about my personal journey, my career journey so far, and मैं ये शायद नहीं करता, बट शायद अगर हम ये सोचे कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड करना, तो कोई सुन के बोले कि भाई हाँ यार बंदा तो जेन्युइन है, कर तो रहा है, because a lot of people think that uh, NGOs make a lot of money and then they actually don't use it on the implementation. ऐसा नहीं है. Hmm. I feel sometimes really envy कि because काफी corporates पूछते हैं हमें कि कितने साल हुए, और हमारे तो लिटरली 2 साल हुए जिसमें 1 साल हमारा Right. प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है. And they were like, oh no, but you have to have 5 years of working. And say, कहाँ से करूँ working? पैसा दो के तब करूँ working. It's like literally, even to show implementation, there has to be fundings. ऐसे Right. ऐसे अगर corporates के जो policies है और जो requirements है, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल को मदद करना है, पर ग्रास रूट लेवल तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 5 years का आईटी रिटर्न्स, लाइक लिटरली. Right. तो मुझे ऐसा लगता है, so there are so many things that has to be changed around functioning and sustainability of an NGO, because काफी NGOs बहुत अच्छे कॉज के साथ आते हैं और ओवरनाइट चले जाते हैं. they Right. don't have support they need, है ना? तो बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कभी कभी खुद पे हंस लेता हूँ, कभी कभी लगता है what the fuck am I'm sorry I'm using this, I like क्या कर रहा हूँ मैं, like literally I can go back deciding कि बस हो गया, एनजीओ की जर्नी 2 साल हो गया, काफी सीख लिया, and I have a choice to either give up or Right. continue. So every morning I get up with an intention to continue karna hai. Every morning I'm ready. Every week, that's why I'm taking therapies. मीनाक्षी push करते रहना आगे, ये चलता रहना चाहिए. Because Let's cross that bridge of progress. एक बार उधर पहुंच गए, then it will be no looking back. actually that is the whole idea, Meenakshi, कि फिलहाल you have worked on a lot of fears that I had from my upbringings and my relationship, my experiences with my life. कहीं ना कहीं वो रिलीज हुआ है, तो एक ब्लर पिक्चर थोड़ी क्लियर दिखने लगी है, एंड वो Right. ब्रिज शायद मैं अकेले ही आगे बढ़ रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है. और टूट ना जाए ब्रिज, वो एक फियर है. नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा. अभी तुम बोल That रहे हो is इसीलिए तो my, मैं that is my, मेरी पूरी गारंटी है, वो ब्रिज नहीं टूटेगा. yeah अगर कहीं and टूटा दिखेगा भी ना, just take that step ahead and you'll find the support. That is my promise. That I is my I'm, absolute promise. I know that Meenakshi, अगर like I'm really glad, like मैंने इसके पहले भी काफी काउंसलिंग सेशंस वो सब किए हैं, and I'm happy कि I have connected to you through LinkedIn and we have now LinkedIn. yeah, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके, इतना like you we share a professional connection to you, my therapist, and I want more people to receive what I am being receiving for so many months through you, because literally I think मैं वो आधे वाले ब्रिज पे भी नहीं पहुंच पाता शायद अब तक. Seeing no support received from anywhere for last 2 years, it is very disappointing, but करना तो पड़ेगा, है ना? Right. वो वाला सीन पे हूँ मैं कि करना तो पड़ेगा. अगर इसी को पर्पस बनाया है लाइफ का, तो करना पड़ेगा, और आधा ब्रिज है बाकी. एंड एंड दो आई साल के लिए आई एम सॉरी, मैं आईआईटी चली गई, वरना मैं 2 साल पहले आ जाती. तुमने बहुत डिले कर दी. उधर 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 टाइम बर्बाद किया मैंने.
So यार तुम्हारी भी जर्नी थी, योर कॉलिंग वाज आल्सो देयर, जहाँ पे पीएचडी छोड़ के आप थेरेपिस्ट बन गए, लाइक सीरियसली वो एक वो अपनी अलग स्टोरी है, बिग टाइम्स, बट राइट नाउ आई सी अ ग्लिम्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल एंड आवर कम्युनिटी एट द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। जैसे मैंने कहा, ब्लर पिक्चर्स क्लियर हो रहे हैं। Right. आई जस्ट होप कि यहाँ से आगे, है ना, जर्नी, क्योंकि मैं खुद एक होप पे जी रहा हूँ और मैं काफी लोगों को होप्स पे रख रहा हूँ कि देयर वुड बी अ बेटर लाइफ, एंड I genuinely want things to be better now. Man, let me tell you something. If not you, then who? If not you, then who? कौन है दूसरा? कौन आगे आएगा? कौन क्यों करेगा? If you will not be able to do it, let me tell you, कोई और शायद नहीं कर पाएगा. It is only you who will be able to do this. And this is why you're doing it, and this is why you're on this journey. It's because only you can do this right now. Yeah. I don't know. Seriously. The thing is, कभी कभी it's very overwhelming, I things get know it's overwhelming. I know. I know it's overwhelming. It's overwhelming for someone जो इस तरह का इतना बड़ा, you've taken a responsibility, and that responsibility can feel overwhelming. जैसे you said ना कि अभी हमने बहुत सारे लोगों को भी hopes पे रखा है. Even I'm on that hope. Turn that hope into faith. And I am asking you, do that. Borrow my faith. Borrow my faith जितना चाहिए. Because trust me, सब कुछ बदलेगा. सब कुछ बदलेगा. Actually, वही है, that sometimes I receive messages from applicants who have been pending and emails, and every time somebody hits us with an email saying that, sir, it's time to pakka hai na, ab to ho jayega. Like I've literally, when we send out emails, of course uh, we let them know what is the current update. जो है वो है, like there is no way to manipulate a situation. जो चल रहा है वो जो जैसा है वो दिखाते हैं, because we know कि बंदे will plan their surgeries Right. accordingly, their dates accordingly. They are sitting, maybe they are waiting for this thing to happen for years, and they know that somewhere financially they might not be capable enough to pursue it for another few years. और वो Right. few years की journey आगे वाली इतनी, because I've been through that. I've earned every single penny for my surgery. I did not borrow or from my family or friends. If मैं रुका था हर एक step आगे बढ़ने के लिए, अभी भी रुका हूँ, but I want this struggle to end, है ना. This weight is killing lot of people. Like मुझे कभी कभी डर लगता है ना, जो applicants हमें मैसेज किए हुए हैं, hope drop ना करे. I hope I right Let now me I'm tell hoping you something. Let me tell you something. You are there at the top, right, Abhi? If you will not lose the hope, they will not lose the hope. yeah. If you will not lose the hope, they will not lose the hope. And actually I'm Because not energy, even because energy reaches them. हम उनसे ऐसे communicate चाहे करें ना करें, but constantly you're communicating with them at the level, at that quantum level, yeah. and they know. So जब तक तुम्हारा hope है, अरे यार, मैं तो I feel they so have that hope. blessed sometimes, मीनाक्षी, कि मेरे कुछ एप्लीकेंट्स है जो शायद मेरे लंबे लाइफ के लिए दुआ मांग रहे हैं एट दिस पॉइंट, स्टेटिंग के भाई हमारा एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, भले ही थोड़ा सेल्फिश मोटिव हो, पर हमारा Right. एप्लीकेशन इन प्रोसेस है भाई, ये बंदे को कुछ ना हो.
है ना। तो बीच में Right. जैसे कोविड वाले सिचुएशंस आ गए थे और काफी लोग वेर मैसेजिंग एंड सेइंग बिकॉज आई वाज रियली नॉट वेल, बट उसके बीच में Right. आई हैव टू बी प्रेजेंट। अगर एक हफ्ते से ज्यादा अगर इंस्टाग्राम या कहीं पे पोस्ट नहीं आते तो पीपल दे गेट कंसर्न, देख Right. चैरिटी चल रही है ना, लाइक हमें हमारा मदद मिलने वाला है। Right. It's sweet. It is difficult to make them understand that there are things that are working, that are in progress around, because in the background we have to reach out to so many people. पहले बात तो वो स्टिग्मा तोड़ना है, तो तब जाके कोई सामने से हमें फील कर पाएगा, है ना। Right. सर्जरीज को कॉस्मेटिक सर्जरीज ना कंसिडर करके एक जेन्युइन रीजन, उसके पीछे का एक जेन्युइन रीजन समझ पाएगा। तो it takes time, and right now, because people are happy that there is a gateway for receiving help for the surgeries, I think पहले से ज्यादा लोगों के patience कम हो गए, कि they just Mm. want to get on the surgical bed and like मुझे पता है ये कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद Right. इतनी ज्यादा एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, ये इस चीज का मुझे अंदाजा है। Socially, I could get all the acceptance today, I can pass well is because I was able to complete certain surgeries on time जब उनकी जरूरत थी। Mm. And there are so many things यार कि मेंटल हेल्थ केयर है जिस पे फोकस अभी हमने रखना है, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों से मिल रहा हो उतना ज्यादा समझ आ रहा है कि भाई कभी कभी तो शायद सर्जरी भी जरूरत नहीं होगी, जितना पीस ऑफ माइंड है ना। एक एक पीस ऑफ माइंड टू बी एबल टू स्लीप विदाउट इंसोम्निया, to be able to focus on your work without worrying about the future, to have all that certainties and luxuries and basic needs also in life, ये Yes. चीजें भी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तो मुझे अभी रियलाइज होता है मेरी थेरेपी से। एंड देयर सो मच टू डू, एंड आई नो आई हैव होप। मुझे पता है कि मैं हर सुबह इस इंटेंशन कभी कभी उस होप को फेथ में चेंज करो and borrow that faith from me. थैंक यू, Borrow बट that faith from me. थैंक यू मीनाक्षी, मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत कम लोग allies भी है, because I know you're an ally. You're learning so much every day. खुद जाके पढ़ती हो LGBT, Absolutely. है ना, for the community। तो Absolutely. आप भी जो I'm बैकग्राउंड में learning, कर still रहे, learning. yeah, even I'm learning, there's so much to explore about the community itself, but उस बीच में मैंने कुछ genuine allies भी बहुत ही कम ही देखे। तो लाइक जो एक कॉर्पोरेट लेवल पे जो एक इंक्लूसिव वाले माहौल क्रिएट करते हैं पर होता कुछ नहीं है, वो वाला क्राउड भी देखा है। और एक जो आप जैसे है जो जेन्युइनली करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिटी को समझना चाहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग कि कोई आउट ऑफ द कम्युनिटी हमें एक एक पैट ऑन द बैक I'm a दे रहा है part कि of the भाई, community. yeah, pat on the back. Yeah, of course you're part of the family, I'm the but I'm the part of the pack. no, we want more people like this also. We want, एक side तो ये होगी कि we want to ease the life of the LGBT community Yes. through our whatever services that TAMS can do or other NGOs can do, because there are some amazing NGOs at the same time who are doing great, and it's not a Right. competition। मुझे ये चीज का बहुत तकलीफ हो रहा है जितना मैं सीख रहा हूँ एनजीओ चलाने के बारे में, that politics has been going everywhere, like everywhere, like sadly, the I don't want to name anybody, but sometimes marketing पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है instead of the cause, and Mm. competition पे ज्यादा focus होता है instead of helping each other। Right. देखो, मैं आई डिड नॉट स्टार्ट दिस चैरिटी कि मेरा कितना नाम या I think मुझे it's कितना, important to unplug. अगर एक मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज से, तो वहां से अपने आप को अनप्लग करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो मूवमेंट जिंदा रहना चाहिए। exactly, like we Right. cannot get distracted from the reason, the actual reason why the cause was initiated।
है ना? Yes. बिकॉज द फाउंडिंग मेंबर्स जो एक कॉज लेके आगे आते हैं, एंड देन द एंटायर मैनेजमेंट एंड टीम्स टेक्स इट ओवर एंड देन मेक्स इट देयर ओन पर्पस, ये Yes. नहीं भूलना चाहिए कहीं पे भी। भले हम कितने Yes. भी फंडिंग रेज कर ले, कितने भी लोगों को मदद कर ले, एक ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। मुझे Yes. लगता है the more you get overwhelmed with what is happening on the social media, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, पोस्ट शेयर करे कि ना करे, सामने वाले की पोस्ट लाइक व्हाट, like I really get frustrated when um, I see that happening, because eventually we कॉर्पोरेट्स में झगड़े होते समझ रहे हैं, गवर्नमेंट में झगड़े हो रहे समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स सब जगह है समझ रहे हैं, बट Right. when an NGO runs for a cause, may it be for cancer, may it be for LGBT, may it be for women empowerment, जो भी है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। क्योंकि आई एम टॉकिंग एज अ थर्ड पर्सन, एज अ लेमैन who has just joined the the battle for the betterment of LGBTQ। काफी सालों से काफी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं वो नहीं बोल रहा, पर अभी उसे खराब ना किया जाए, है ना? Right. तो करने के लिए बहुत कुछ है, एंड यस, यस आई एम स्टिकिंग द होप, यस आई एम गेटिंग अप एवरी मॉर्निंग विद Borrow my faith. यस, यस Borrow एंड my faith. बाद में मैं सूद समेत वापस ले लूंगी, बट राइट नाउ हाँ, टेक इट, अभी जरूरत है ना, इनवॉइस, बोरो इट। इनवॉइस में डाल देना। इनवॉइस में डाल दूंगी। तुम्हारे काफी पोइंटिंग इनवॉइस चल रहे हैं, उसमें ही एक और डाल दे देगा कि फेथ का इतना पैसा हुआ है, ये बहुत हाँ। ज्यादा जरूरी था। बट seriously, Meenakshi, I don't know how I could also pull it off so well for this last 2 years if I wouldn't have people like you in Yes. my life, and my partner, my family, uh, Sharon, Akash. I can't say thank you enough. And there are a lot of people from the community as well, who have now accepted me as their brother and elder brother and bhai, and there's so many relationships that I've created over the last 2 years. It's amazing. Like अमेजिंग है sometimes ना जर्नी। अमेजिंग है, यानी फेम तो बिना मांगे मिल गया, वो तो बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री है। बिकॉज व्हेन आई नाउ वॉक अप टू प्लेसेस एंड आई गो टू प्लेसेस एंड कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते हैं, वहां पे पीपल ऑलरेडी नो मी बाय माय नेम, और मुझे बहुत राइट। शॉकिंग लगता है ये सब। क्योंकि मैंने कॉर्स चालू करते वक्त दिस वाज नॉट माय एजेंडा कि मुझे मुझे कौन सा अवार्ड या कौन से पेडिस्टल पे रखा जाएगा, या कितने लोग, या कितने, इट वाज इन इट वुड माय बी सो एजेंडा। नाइस ना अगर ये वीडियो प्ले हुआ उस दिन जिस दिन यू माइट एक्चुअली गेट एन अवार्ड। उस दिन ये वीडियो प्ले होना चाहिए। आई डोंट नो, अवार्ड का तो फिलहाल मैंने सोचा नहीं। फिलहाल मेरे मेरा इंटेंशन एट दिस पॉइंट इज कि जितना बैकलॉग चल रहा है 2022 का, मेरे लिए मेरा अवार्ड वही हो जाएगा। आई विल हैव अ सुकून की नींद दैट डे व्हेन आई सी के सारे एप्लीकेंट्स के ग्रांट रिलीज होके मैं सुकून से सो सकता हूँ। I think mental health care planning for April and 2023 to begin, and to then have a relaxed, then maybe I'll go for a vacation for 2 days. Maybe I'll take a break, because that is a such needed time for myself कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि स्विच ऑफ करो फोन 2 दिन के लिए, और लोग जाते हैं हिमालय, इतना दूर तो नहीं, बट एटलीस्ट कहीं महाराष्ट्र में कहीं पे, बीच साइड पे, जय अ, महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, लाइक देयर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया यार। तो कहीं जाके 2 दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करूं, है ना? So this is my plan and my hope right now. A lot of hopes, lot of wish list काफी है लोगों की जो पूरी करनी है, मेरी खुद की भी है जो I think I should also honor myself, because I यस, don't think एब्सोल्युटली। अगर मैं किसी और का स्ट्रगल कम कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी भी तो एक लाइफ है यार।
ये चीज भूल Yes. जा रहे हैं लोग कि कि Actually ये मेरी भी बहुत जरूरी है, बहुत या जरूरी है. so I think I will get some time to then start honoring myself. पहले ये backlog is my intention, and I think where the way we are going, Meenakshi, with our sessions, and today we are actually recording this so that we can play it sometime. For our I future selves. Yeah, for our future selves to look back maybe after a year from here when we look back at this video. पता नहीं हम दोनों किस मुकाम पे हो गए, जहाँ पे हो गए अच्छे हो गए, इतना श्योर है. Absolutely. And How does it get better than this? And what else what is is possible? possible exactly. And it will be amazing to then sit back and look at this video and laugh कि ये Absolutely. Chappal wali story. अच्छा. It all started with chappal wali story. या एक्चुअली आज दिल खोल के बात हुई तो वो चप्पल वाली चीजें बाहर आई. मेरे कुछ अनरियलिस्टिक मैंने जो एक्सपेंसेस कर लिए है, बिकॉज काफी लोगों ने मेरे को कहा कि यार जितना लोन तू लेके बैठा है उतना अगर खुद के लिए लेता तो अब तक तू खुद की तो सर्जरी करा ही लेता, विच इज ट्रू. अगर मैं वैसे उस तरह से सोचता तो 10 लाख was enough for me to pursue whatever Right. my pending stuff is. बट अब लगता है कि 10 का 10 करोड़ भी बन जाएगा. कोई सुनेगा तो अपना Exactly. डोनेशन भी आ जाएगा. 10 करोड़ से पता नहीं कितने लोगों की मदद कर पाएंगे, है ना. Exactly. लाइक Because institution या हम एक जो एक जहाँ पे हम help कर रहे हैं, that needs fund, and fund is very important. हर एनजीओ, Money is एवरी very एनजीओ, important. सी एंड Exactly, for मीनाक्षी, every NGO. everybody everybody everything that I have realized so far while raising funds, nobody is helping NGO out of empathy only. उनका भी Right, पर्सनल एजेंडाज है. गवर्नमेंट हैज पुट सम पॉलिसीज right, जहाँ पे उनको उनके प्रॉफिट से एक सर्टेन परसेंटेज डोनेट फॉर दैट टैक्स बेनिफिट करना ही होगा. तो right. it's not always about कि how much corporates or individuals HNIs are feeling for the cause. Sometimes it's just for their tax benefit. But जो भी हो, like reason चाहे उनका जो भी हो, like भाई NGO needs funds. Every NGO needs. Yes, एंड वो yes, कर क्या रहा है जो एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा, वो एक एनजीओ कर पा रहा है, हेल्पिंग मोर create better human beings, better society, social justice. So many things come and an impact which is everlasting. So I exactly. think पैसे की ग्रीड नहीं है, ये जरूरत है. एंड And money should be respected. It is या a और very beautiful energy. it should reach the right people. I think Exactly. ये जो हमारा imbalance है society में, the rich getting richer and the poor and the middle class, are under burdens. Right. Uh, कहीं ना कहीं if the NGOs, all the NGOs, I'm not talking about us, are supported right for their impact, that economy will also start having a balance. Yes. Humanity will then make sense. uh, such mein, this is how I feel about it. And I will not take much of your time because you already done a session for me to, and Working, then working आके बाद हो रहा है. yeah, it's 11:30, almost 11:30 at night, and after a full day of working, we still have so much energy. मतलब आप सोच सकते हो कि है बात तो है हमारे में कि चैरिटी चला रहे हैं, बिल्कुल. है ना. So yeah, thank you again, Meenakshi, but and please stay And stick thank to you, us. man. Seriously, thank you, man. Why? Because if not you, then who? Or शायद, for the 2 years that you have spent with yourself, शायद उस समय अभी join हुआ है ना, अभी थोड़े थोड़े महीने पहले. But before that, thank you for carrying this till here, till now. Because अभी तो लोग join करेंगे, but what you have spent till now was beyond amazing.
Please appreciate yourself for that as well. And today I'm appreciating on behalf of all the people and everyone. कि seriously amazing. वो 2 साल तक मैं भी IIT में थी. But for those 2 years, you still stayed in the game. Yeah, And it's your a game. success started there. Your success started there. अभी तो result आएगा उसका. But your अभी तो success result started आएगा. there. Yeah, because I want to really see more people help during this next 2 years, and more mental health care therapy is promoted throughout India. Uh, because counseling has its own meaning, it has its own benefits. Yes. But when we are looking at something very permanent and solution oriented, I think therapy does wonders. It's helping me. I can personally see myself and my growth. I, at least, as I said, I have the blur pictures of my future, and the things that I'm trying to create for the community were so unknown. But now there is a glimpse of how we can put a better foot forward and see better things coming to us. एक planning implementation चीजें दिख रही है. Yes, there is a Right. long way to go, but I'm sure with all that we have spoken today, and uh, अभी तो 100 साल जिंदा रहना है. अभी से लेके 100 साल तक contribute करना है. yes, inshallah that is true. Uh, जब तक सांस चलेगी कॉज चलेगा वाला सीन है ना. Exactly. तो उसके बाद थी. Because it's a movement. It's a movement which you have created. And it will move forward like a legacy. yeah, because I realized for so many years when we started this cause, Meenakshi, there was no single NGO working on Right. gender affirming transgender surgeries as a full as a main cause, and it's still not there. People do shell off a part, but they have. It is very surprising कि इतने सालों से सबको पता था कि भाई 70% ट्रांसजेंडर को अगर आप मेडिकली ट्रांजिशन में हेल्प कराते हो तो उसकी लाइफ बन जाती है. तो माय क्वेश्चन Right. वाज ऑलवेज आई वाज लॉस्ट इन द थॉट कि जब पता था तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं इस बारे में, That है ना. is why, if not you, then who? That is why. If not you, then who? If not now, then when? Yeah, it's time we It's change. time. It's time. It's It's time. time. It's It's time. time. That's great, Vinakshi. And I know you're recording this. This was fun. So you I said it. hope it is being recorded. Yeah, it's been Yes. saying recording. But whatever it is, I don't know if we are still ready to put this out on social media. अभी नहीं, अभी wait कर. उस दिन डालेंगे जिस दिन हमें एक्चुअली इसको देखने की जरूरत पड़ेगी. देखेंगे चलो, इसको. It's for, it's like writing a letter for our future selves, and we are just doing it on a video. Record कर रहे हैं अपने लिए. We ताकि will watch हम it. वापस देख के बाद सच में मुझे लगता है हम काफी हंसने वाले हैं जब जब भी ये प्ले कमिंग आउट कि भाई ये थे हमारे कंसर्न्स और इसमें से हम बाहर निकले. तो अगर इसमें से बाहर निकले तो आगे तो कोई भी मुश्किल आगे Exactly. जाएगा. Exactly. Knowing Right. that we have come from where we were at a point of time, हमें ये पता रहेगा कि आगे के challenges भी बस इसी अरे तरह के हैं. जिस बंदे ने अगर लैपटॉप चप्पल के साथ है ना, तो फिर It is an शायद amazing, amazing thing which happened with चप्पल पे रख के. हाँ होता है. अभी क्या करें, वी डोंट हैव इनफ facilities, but But it's a uh, beautiful thing. It's a beautiful yeah, thing. जो भी हो रहा है होम ऑफिस से हो रहा है, पर एक दिन inshallah there will be a proper therapy center where people can come down and sit And down there and we'll play it session. on its inauguration day. हाँ ऑफ कोर्स तुम ही रिबन काटोगी. मीनाक्षी कौन है? हाँ, कौन है और कौन? तू नहीं तो कौन भी. राइट.
Yeah, this is amazing. Thank you again for letting me do this. You really Thank you inspired. for doing it. मतलब मैं भी फ्लो में आ गया, तुमने इतना मेरे को ये पंप अप कर दिया, इंस्पायर कर दिया कि मैंने बोला चलो करते हैं। नहीं तो मैं मैंने सोचा कि बात भी नहीं छोड़ते हैं ना, वरना वीडियो की तरह वो बनता रहेगा फिर। हाँ यार, तुम्हारी टेस्टिमोनियल बात है, लाइक लिटरली मुझे लगता है होप बाय द टाइम व्हेन वी आर वाचिंग दिस वीडियो समडे द टेस्टिमोनियल इज ऑलरेडी आउट। नहीं तो पता चला होपफुली। अभी तो लाइक टेस्टिमोनियल नहीं बनी। बट seriously, thank you again. And of course, we will have a session tomorrow too, because जब तक मैं चलता रहूंगा, और अपना ध्यान रखूंगा, तो अभी साथ में और एग्जैक्टली। भी लोग आएंगे, तो सबका साथ में हील होना है, सबको साथ में हील होना है, राइट? तो या, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक एंड यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू दिस। Thank you. Thank you for your time as well. And thank you for your 2 years as well. And thank you for all the time which is going to come and which you are going to spend. Invest. Invest. yes, We decided to use the word invest. invest. Time, effort, energy, money, everything. Yeah. Tell them, even, record this for yourself, how much wo kitna list gaya hai, how much you have invested. You said Like, कि you borrowed, I mean, 10 lakhs is the thing, but उसमें included है the part which you say कि investment जो हुआ है, या वो अलग इन्वेस्टमेंट, से है? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट तो उसी में से हुआ है, बट जो तरीके से किया गया है ना, लाइक समटाइम्स आई हैव गॉन टू सैमसंग गैलरी, लाइक दिस इज जस्ट वन लास्ट स्टोरी, बिकॉज कहने के लिए बहुत सारे हैं, तुम्हें लगेगा ये बंदा बहुत जुगाड़ू है, पर उस वक्त के लिए जो जरूरत ही था, लाइक व्हाटएवर Right. वाज इम्पोर्टेंट टू बी डन बेस्ड ऑन इमरजेंसीज, कि एक टाइम ऐसा आया था कि आई हैव टू पे द टीम सैलरीज, एंड उसी सैलरी के अलावा भी देयर वाज अ सर्जरी टू बी हेल्प्ड ऑन इमरजेंसी बेसिस। Mhm. और मैंने किया क्या था, सो I had never taken loan for, that was the first time I actually did such transaction about the loan thing. I went to Samsung Gallery and there was this friend who took me there, and just to check what phone I can avail on my CIBIL score and whatever. मैं को ये सब Mhm. कुछ नहीं मैं ये सब नहीं जानता था। Okay. And then I was like, okay. And then we went, and it was that based on my whatever, my CIBIL Civil score score. and whatever, I could buy a Samsung Z Pro, the flip phone, which is around 175 lakhs, like उसी के कुछ रेंज में है, एंड आई हैड एन अप्रूवल ऑफ 175 lakhs। मैंने बोला भाई मोबाइल खरीद सकता हूँ मैं इतना बड़ा, सो पता ही नहीं था। सो दे हैव दिस कैश फंड्स, मेरे को ये टर्म भी नहीं पता था लाइफ में कभी। सो दे वर लाइक, they will swipe like they will avail the loan and they will give us cash, और cash की Mhm. जरूरत थी because I have to pay salaries to our employees, and at the same time there was a person who needed like Mhm. funds for the surgery. Not necessary they were directly an applicant, but they were falling Okay. short of funds. uh, तो मैंने बोला कि ठीक है, करते हैं। So I swipe, the transaction happened for 101 lakh 53,000, because I think that's the cost of the phone, and I got 80,000 in hand। ठीक है, Mhm. यानी वो बंदे ने मेरे को लूट लिया, लिटरली फॉर मेकिंग दैट ट्रांजैक्शन, लूट लिया। एंड दिस इज जस्ट वन सीन और जुगाड़ आई एम सेइंग, बिकॉज इतना हेल्पलेस था कि चैरिटी बंद नहीं होनी, सैलरीज Right. इसलिए जरूरी थे बिकॉज एम्प्लॉय को टाइमली पैसा देना, बिकॉज दे वर्क फॉर दोस 30 days। एंड so right now I am left with nobody except me and Akash, who was on a full-time pay, because I had to let go of the people I really didn't want it to. Like, if Right. Yadnya is watching this video, she knows very well. Ke
I was really sad that uh, because I could not raise funds enough for the charity on time, and that my personal fundings did not come on time, that I had to let go of an employee. Not just an employee, but we created a relation, and she's an amazing trans woman, very talented and creative, and I had to let go of her because Right. I could not manage. I could not manage paying salaries. So I don't wanted to end this video on a sad note. Don't you see how amazingly you have handled it through till now? Yeah, I'm still paying Do the you EMI. think it's easy for anyone actually to go through something like this and you went through it? Don't you I see think there how is some, amazingly you handled it? Actually, you managed it. actually अभी लग मीनाक्षी रहा है कि सामने वाले बोलने के बाद ही नहीं, जब आप बोल रहे हो ना तब रियलाइज होता है. पर I think universe or some supernatural power, again I am that I'm really thankful for, is giving me that push to again wake up the next day, maybe take up another loan, yes, or ask for more help, and but step up again, get on my laptop, on the laptop that is dysfunctional but still workable, get on it and do my things. So I'm feel grateful. I hold gratitude for for maybe universe has chosen me to lead this cause and take it ahead. तो करेंगे. exactly. Okay, जान I पे. mean, it was not easy. शायद मैं नहीं कर पाती, मैं सोच भी नहीं पाती. लोन लेना इतने उससे and you said कि लूट लिया उसने, but still you went forward with it. Still you are here. Still, I think that's a huge achievement. You're already on the road of success. वो success की कहानी तो बहुत पहले start हो चुकी है. हम्म, वो तो है. Now I really want कि सबके फटाफट सर्जरीज हो जाए और मैं 2 दिन का ब्रेक. So बिल्कुल. let's see. I'm hoping for the best things to show up in our life right now. So hoping for good things to happen in my personal life too. Even I deserve. I come a long Exactly. way. I've really come a long way. 34 एक दिन में तो नहीं बना. तो transition मेरे भी हुए हैं, and like I've also had a journey. So it's time I also need some ease in my life. So let's see what the universe has to bring. How does it get any better than this? What is Yes, and what else is possible? yes, what else is possible? Hello, Meenakshi. I'm thankful again for giving me this push. आज तो रुला दिया बे तूने therapy के बाहर. But सच में बिना थेरेपी कराए ना बिना सेशन therapy के कराए. रुला दिया. Yes, but again, thank you, and I hope the best for you too. And yeah, you're not going anywhere. दोनों Ribbon काटना साथ में प्रोग्रेस करते हैं. exactly, ribbon काटना बाकी है. मैंने वही बोला. Uh, बिल्कुल. yeah, and I hope to see you soon too. You take care, and सेम यार. कल सुबह 11 11:30 बजे call. बिल्कुल. Get back to work. Okay, बैक टू वर्क. back to work. Okay, बैक चलो टू बच्चा. वर्क. Take care. श्योर. God. एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको भी आई होप यू गाइस हैव अ प्रोडक्टिव डे. Yeah, yeah, yeah. Please stay, be positive, and never ever lose hope. There is always a story. Uh, Look for inspiration everywhere around you all. You will know that uh, there is always a reason to live your life. यस. Don't give up. एंड यू कैन बोरो आवर फेथ. प्लीज बोरो आवर And फेथ. more on faith. ले लो सब कुछ. बोरो आवर फेथ. ले लो. Thank you, Meenakshi. Thank you for inspiring so many people. अभी जाओ सो जाओ सुबह 11:30 का. We have to get on a call. Okay. राइट 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 Well, राइट take care, राइट. bachcha. Bye. God bless. Bye. बाय बाय.
Transgender